Okay, solve one question. Deborah, do you remember what is transpose of a matrix? Yes, sir. Just the Ah. opposite. Yes, right. The interchange of rows and columns. Mm. So just try to solve this. Matrix is given as 1, 2, 2, 2, 1, minus 2, A, 2, B. And they are saying it is given that A transpose is equal to 9I. What is I? I is the identity matrix, right? And the matrix, yes, sir. So here identity matrix will be 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, right? Mm-hmm. So now can you solve? Read the question what they are saying. Sir, can you read the question one more time? They are saying there is a matrix A, right? It is in that A into A transpose is equals to 9I. You have to find A and B. Okay. Do you think you can solve this? Try, sir. See, matrix में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. Right? What they are saying A into A transpose is equals to 9I, right? Mm-hmm. Do you have matrix A? Yes or no? Yeah. Do you have? Yes. Yes, right? They have given you matrix A. Can you find A transpose? Yeah. Do you know how to multiply? Yes, sir. Can you find 9I? Mm. So can you solve equations? Yes or no? Yes, sir. So that is all you have to do. Okay? Yes, sir. So give it a try. Okay? And give me 2 minutes. I'll be back in 2 minutes. Till then, you find A transpose and then multiply. Okay? Okay, sir. All right.
Okay, Depura, have you solved this? Yes, sir. I What got can I say? -2 -1. -2 -1. Yes, that is correct answer. All right. So everything cool? Yes, sir. Let's see a few more questions on this. All right. So question मुश्किल लगेंगे, but they are not difficult. Okay. And but let's start it with. Okay. Next is symmetric matrices. Right on symmetric. And when do you have your exams, Depura? Within a week, sir. This week. And the chapters that are coming? Two chapters. Matrices and determinants, I guess. Yes. Oh, yeah. So determinant, I do not think will complete that. So you have understood anything from school? Yes, sir. Have you understood everything in school? Determinants? Yeah, it was easy. Okay. All right. But from the next exam, we'll be up to date. All right, now please. Okay, sir. So what is a symmetric matrix? A matrix A will be called symmetric matrix if Aij equals to Aj. All right. Simply means A equals to A transpose. ठीक है, उसको उल्टा पुल्टा करो तो फिर भी वो सेम मैट्रिक्स निकल के आ जाता है. All right. Okay, sir. This is called symmetric matrix. That if you find transpose, we do not care. For an example, if you write 1, 2, 3, -5 is 5, -6, -6, -7, -7. Right? I wrote it in a very weird way, but this is first row, second row, and third row. Okay. Can you tell me what will be A transpose here? A transpose. Yes, A transpose. This is A matrix. So A transpose. Oh, that will be 1. Mhm. 1 minus 5.2. Oh, what 1 did you minus 5. See, take the first row. No, Let's no, write. no. Means, sir, that's 0.2 or -5. That is another column. Actually, let me rewrite this matrix. Important is. This is 1 minus 5 minus 6. -6. Okay. -1, 2, -7. -7. -6, -7, and 3. All right. Now, can you tell me what will be A transpose? 1 minus 5 minus 6. Okay. In row or vertically? It's in column. I mean, In column. Okay. All right. -5, 2, -7, Okay. -6, -7, 3. Now, what is the difference between these two? जो ऊपर था और जो नीचे है. Are they equal matrix? Yes. But हमने तो transpose करा इसका, right? So I can say that A equals to A transpose. So this is called symmetric matrix. Okay, very simple. Okay, sir. And you should look at this very closely. This element and this element are equal. This element and this element are equal. And this element and this element are equal, right? If I write it, this is A1, 2.
first to second column, right? And this A21. So can you see the similarity? Aij must be equal to Aj. Okay? Okay. So A13 must be equal to A31. Yes. Okay. This is A13 and this is A31. You can see A1. they're equal, right? Yes, sir. So whenever this happens, the matrix automatically becomes symmetric matrix. Okay, sir. Please write it down with the example. Tell me when you are done. Yes, sir. Next one is skew symmetric matrix. And if in a matrix A, Aij equals to minus of Aji, then matrix is skew symmetric. Alright? Yes, sir. What this means? Very simple. If I write a matrix which is 1, 2, 3, and this is my 0, 2, 3, next to 0, 5, minus 3, minus 5, 0. Okay. What is A transpose? A. Oh, okay. That is 0, minus 2, minus 3. 2, 0, minus 5. Right. 3, 5, 0. What is the difference between these two, A and A transpose? A1, 2, they're not equal, sir. They are not. But do you see any pattern? Yeah. 0. If I see, if I take common a negative sign from transpose, or if I multiply minus 1, then all the numbers will be multiplied with minus 1, right? So 0 becomes 0, minus 2 becomes 2, 2. minus 3 becomes 3, 3. 2 becomes minus 2. Getting 0, the point? minus 5, yes, sir. So I can say that A equals to minus of A transpose, yes or no? Okay, sir. And so this is what we have written, that this is A12 and this is A21. They are of opposite signs. All right. Okay, sir. So A and A transpose, if you add them, then it will become 0. Got it? So if this happens, then the matrix is called skew symmetric matrix. All right. Okay, sir. Very simple. Yes, sir. Please write it down. Hello, Aliza. हेलो सर। बड़े दिन बाद आए हैं आप क्लास में। जी सर। राइट, बहुत कुछ मिस कर दिया ना आपने। यस सर। Okay, so we'll arrange backup classes. All right, don't worry. ओके सर। Do not be absent from the next class. All right. यस सर। सर वो टाइम का मसला हो रहा था।
हाँ यार, मुझे भी काफी लेट पता चला, एक्चुअली टाइम की दिक्कत थी, बट कोई बात नहीं, अब सब कुछ हो गया ठीक। Yes, sir. बट आज भी आप लेट आए हैं ना? What, sir? टुडे ऑल्सो केम लेट? Sir, I didn't know कि आज class होगी. So when I came back from my class, I slept. And then I got a call from my dad कि Okay. they are calling. So then I came now. Alright. So from now onwards, your class will be on Saturday, Sunday. Alright, 6:30. Saturday, Sunday. Okay. Okay, 6:30 बाहर का टाइम, इंडिया का टाइम 9 PM. Okay. Alright. Yes, sir. तो याद रख लीजिएगा, क्लास मत मिस करिएगा। मैथ्स में बड़ी दिक्कत होती है यार, बैकअप मत करे ना, Sir, टाइमिंग I के एडजस्ट कर। Mhm. हाँ, Sir, और I एक asked didn't want to, but वो हो जा रहा था like. ऑलराइट, नो इश्यूज, बैकअप मिलेंगे आपको, रिकॉर्डिंग से मिल जाएंगे। ऑलराइट, ज्यादा मिस नहीं हुआ है, सो Yes, sir. नो वरीज। तो आज का क्लास शायद आपको ऊपर से चला जाए। ऑलराइट, डू नॉट वरी अबाउट Mm. दैट, कवर कर लेंगे, ठीक है। Okay, sir. बट ये चीज समझ में आएगी जो आज मैंने करा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? Sir, अभी जॉब नहीं करा? हाँ, अभी करा है जो। हाँ, आ गया थोड़ा थोड़ा. ठीक है, मैं एक बार ना वैसे फटाफट से समझा देता हूँ। दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, राइट, दो तरह के मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, आपको ट्रांसपोज नहीं पता होगा, ट्रांसपोज। Sir, you're Are you asking there? what is transpose? Yes. Do you know Sir, what is it? उसमें I think रो को कॉलम बना देते हैं इस टाइप से. बिल्कुल बिल्कुल सही, रो को कॉलम बना देते हैं, है ना। हम्म. तो यहाँ देखो, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, सर, ये मैट्रिक्स, ठीक है। इसको जब हम रो को कॉलम बना देंगे तो क्या मिल जाएगा? ए ट्रांसपोज, राइट। Yes, sir. तो इसी चीज में हमने कैटेगराइज करके दो मैट्रिक्स बनते हैं, वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। Okay. तो सिमेट्रिक क्या होता है? बहुत सिंपल, आपने ए को ट्रांसपोज कर दिया तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। Yes, sir. अगर वो दोनों इक्वल हो जाए, कि कोई भी चेंजेस नहीं आया, ट्रांसफर करने के बाद भी हमें सेम टू सेम वही चीज मिल गई, हम्म. तो हम क्या बोलते हैं? ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Symmetric. यस, सिमेट्रिक बोलते हैं ना, If they are सिमेट्रिक, सेम equal. सेम चीज। यस, राइट। Okay. इफ ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, देन दे आर सिमेट्रिक, ऑलराइट। Okay, sir. तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, Okay. ठीक है, आपने ट्रांसपोज किया, आपने देखा कि इन दोनों में बस एक ही चीज का फर्क है, विच इज नेगेटिव साइन, दैट इफ यू Hmm. मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन तो वापस से वही चीज बन जाए, Okay. ऑलराइट। देन दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्री। Okay. ओके, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? Yes, sir. ओके, डेबोरा, नोटेड? Yes, sir. So in skew symmetric matrix we saw that aij equals to negative aji, right? Mm. बट यार वही है ना, मैथमेटिशियन बहुत स्मार्ट होते हैं, तो हम एक काम करते हैं, लेट्स पुट I equals to j, alright, so I can say aii equals to negative of aii, yes or no? Mm. So I can say 2aii equals to 0, that means aii must be equal to 0, got it? Yes, sir. So what this means, aii का मतलब क्या होता है? कि रो और कॉलम सेम, दैट मींस a11 a22 a33 a44 all the diagonal edges, right, Mm. must be 0, must be equal 0. So Zero. skew symmetric matrix में हमेशा diagonal elements have to be 0. Okay, Yes, sir. so ये लिख लीजिए, skew symmetric matrix
diagonal elements must be 0. All right, Aliza, clear here? Yes, sir. Yes, sir. Finish, sir. Okay, let's solve one question on this. ठीक है, मैं तो नहीं करूँगा, आप लोग करोगे solve. Okay. If a matrix A equals to 0 alpha 3 2 beta minus 1 C or gamma 1 0 is a skew symmetric matrix. Find A, B, and C, which is Edukiran and gamma. Okay. Question is clear, all of you? Sir, 0, 2, then fine. This is gamma. Okay, alpha, beta, gamma, like this. You can take A, B, C, right? This A, this B, and C. Same thing, right? We just have to find the variables. Question is clear, Aliza, Deborah? Yes, sir. So can you try solving this?
Sir, done. Okay, very simple question, right? What they are saying? A is a skew symmetric matrix with the definition A must equal to A negative of A transpose. So A is 0, A 3, 2, B minus 1, C 1, 0, negative of A transpose 0, A 3, 2, minus 1, C 1, 0. Okay, now by comparison, you can get this. Yes or no? No. So very simple. A will be equal to minus 2, and B will be equal to 0, and C square is equal to minus 3. All right. Yes, sir. Yes, sir. Another question. Given a skew symmetric matrix A equals to 0, A 1, minus 1, B minus 1, C 0, then find the value of A plus B plus C whole square. Okay. Okay, sir. Very simple question. Sir, 0. Okay. Yes, it is skew symmetric. So B is 0, A is 1, C is minus 1. Minus 1. Yes, right. So the answer is 0. Everyone okay with this? Yes, sir. One more question on this. A is given as 0, 2B, minus 2, 3, 1, 3, 3A, 3, minus 1. They are saying A is a symmetric matrix.
find A and B. Very simple question. Sir, done. Okay. What is the answer? Yes, sir. What is the answer? A equals to -1 and B equals to 3/2. A equals to -1. Sure. Not -1, just 1. Sure. Sir, Sir, I got a You got this minus. -2/3. Yes, -2/3. Hmm. देखो बहुत सिंपल है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ये वाले एलिमेंट्स इक्वल होता है, राइट? So 3 must be equal to 2b, so b must be equal to 3/2, and 3a is equal to -2, so a must be equal to -2/3. Okay, Yes, sir. Aliza? yes, sir. नो, वैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपकी ऐसे यस सर से। सर मुझे दिख नहीं, मतलब 3A के सामने तो -3 है। नहीं, -3 कहाँ पर है? -2 है ना ये। Oh, आपने तो लिख दिया है। I wrote it wrong. पेपर में सर मैंने खुद से रिसर्च किया इंडिविजुअली, दैट स्टूडेंट्स स्कोर 20-30% लेस, बिकॉज वो काफी बिजी पेपर में है ना, क्वेश्चन पढ़ने का उनके पास सही से टाइम नहीं होता, राइट अलीजा? No, sir. हाँ, तो टाइम निकाल के ना जब पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वी शुड टेक टाइम टू रीड द क्वेश्चन Yes. वेरी केयरफुली। ओके? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जिस दिन हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, दिस वोंट मैटर कि मैट्रिसेस आपको आता है नहीं आता। Hmm. हाँ, तो टॉपिक अब देखो बहुत ही कमाल की चीज पढ़ेंगे, थ्योरम 1, that if there is a matrix A, then A plus A transpose is always a symmetric matrix, and A minus A transpose is always a skew symmetric matrix. ये मैजिक है, ठीक है? अब दुनिया में, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लोग हैं, ठीक है? मैट्रिक्स पे देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हिच मींस सपोज मैंने ऐसा ले लिया कि ये है 1 2 3 4, ओके? सो कैन यू गाइस प्लीज फाइंड पार्ट 1 पार्ट 2? अब ट्रांसपोज फाइंड करिए, पहले ऐड करके देखिएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके देखिए व्हाट यू गेट। ऑलराइट, Okay. फटाफट से करिए, देखिए क्या आता है।
सर यही आ रहा है। यही आ रहा है मतलब, हाँ मतलब स्टेटमेंट 2 आ रही है ना। देखिए 8 प्लस ट्रांसपोज करेंगे, सो व्हाट विल गेट 2 5 5 8 एंड a माइनस 8 ट्रांसपोज करेंगे, -1 1 एंड 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखो 5 और 5 इक्वल इक्वल है, ट्रांसपोज इसको मैंने सी मैट्रिक्स मान लिया। सो इफ आई टेक सी ट्रांसपोज then also I will get the same matrix, yes or no? And if I take this matrix as D matrix, ठीक है, ये D है तो D ट्रांसपोज निकालो, so we can see this is skew symmetric, yes or no? यस देखो आपको थोड़ा नहीं समझ में आया, राइट? देखो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। Yes, sir. It's kind of confusing. See, what is actually happening is this is not very confusing. This is we are searching for meaning in this. That why we are doing this. इसे क्यों, क्या हो रहा है, right? See, why this is very important is आप में से लेकिन मैंने से क्या बनना चाहते हो? देवरा, what do you want to be like in 5-6 years? कुछ सोच रखा आपने? Yes, sir. Have any goals like 4-5 साल के बाद क्या बनना है आपको? इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, anything A else? doctor. डॉक्टर, okay. Aliza, what about you? इंजीनियर। इंजीनियर, ठीक है। तो अलीजा would relate to this better, but आजकल के सबके टाइम आपने एआई का नाम सुना है? आजकल काफी ट्रेंडिंग में Yes, sir. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस सर। राइट? आजकल मेडिकल फील्ड में भी काफी है, चैट जीपीटी, राइट? आंसर्स वहीं से कॉपी करते होंगे बच्चे, बट वो बिल्ड कैसे होता है? देखो, all the revolution in computer field is coming through matrices, ठीक है? पूरा एआई को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूंगा, इट इज ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स। बहुत ही कमाल की चीज है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो के हमें वो आंसर दे देते, व्हिच इज कॉल्ड एआई, ओके? तो ये चीज क्यों हमें बहुत अच्छी लग रही है? क्या कह रहा है? देखो, इफ देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन a plus a ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? हमें ट्रांसपोज निकालना आता है, हमें a ऑलरेडी पता है, हमें पता है कि इन दोनों को ऐड कर दूं तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्या हो गया सर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलने से ऐसा कौन सा तीर चला दिया आप? इफ यू लुक एट सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, राइट? डायगोनल मतलब ऑपोजिट साइड्स वाले, राइट? तो यहाँ पर ना हमें स्टोर कम करना पड़ता है डेटा, नहीं आई वहां से। Okay, we sir. can all we can always write aij equals to aj I, और कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा, वो पूरी मैट्रिक्स डिफाइन कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अब इसके आगे एक थ्योरम है व्हिच सेज, अब ये एक्चुअली ज्यादा कमाल है, थ्योरम 2, दैट एनी मैट्रिक्स कैन बी written as addition of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। ठीक है, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है व्हिच मींस कि दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स लिख दो आप, 1 -1 2 3 4 5 -5 0 6, alright? They are saying this matrix can be represented as addition of two matrices. One will be symmetric
one will be skew symmetric. और इससे क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल, स्क्यू सिमेट्रिक का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल, राइट? So this is how we can transform any matrix in the form of a symmetric and skew symmetric matrix. Okay? Okay, sir. This is theorem 2. तो ये कंप्यूटर साइंस में बहुत बहुत ज्यादा यूज है. ऑलराइट त्रिपुरा, दिस इज क्लियर? Yes, sir. अब थ्योरम 1 को यहाँ पे लगाइए. व्हाट दे आर सेइंग, A plus A transpose is always symmetric. A minus A transpose is always skew symmetric. तो ये सिमेट्रिक के जगह हम क्या लिखते हैं? इफ आई राइट A plus A transpose, मुझे पता है सिमेट्रिक होता है, राइट? A minus A transpose, दिस इज skew symmetric. Yes or no? Yes, sir. अगर मैं एक मैट्रिक्स A है, उसको दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज skew symmetric. So yes, I can write any matrix in the form of a symmetric and skew symmetric matrix, but यहाँ देखो माइनस A ट्रांसपोज कैंसिल होके हमारे पास बच क्या रहे, 2A. सो A कैन नॉट बी टू A, तो हम क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, you can write any matrix A in this form, A plus A transpose plus half of A minus A transpose. And क्यों करते हैं? This matrix will be a symmetric matrix. This matrix will be a skew symmetric matrix. All right? Yes, sir. और ये चीज अभी भी किसी को समझ में नहीं आएगी सर क्या क्या कह गए, हमें तो नहीं पता. Then just remember this, all right, as a formula. क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सिंपल से पूछ देगा वो कि write this matrix in the form of a symmetric and skew symmetric matrix. आपको क्या करना होगा, आपको ये निकालना होगा, आपको ये निकालना होगा और आंसर दे दो. ऑल राइट? Yes, sir. सो प्लीज यहाँ से लिख लीजिए, थ्योरम 2 भी लिख लीजिए एंड उसके बाद नीचे अलीजा, देबोरा, Yes, आया कुछ कुछ समझ में? yes, sir. Yes, sir. Finish, sir. दिस वन आल्सो. No.
Yes, sir. So let's solve one question on this. तो इस पे क्वेश्चन में बहुत सिंपल आता है एंड बहुत सारे नंबर का, बट कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना पड़ेगा. Express the matrix B equals to 2 minus 2 minus 4 minus 1 is 4 1 minus 2 minus 3 in the form of sum of symmetric and skew symmetrics. Write down the question. Done writing the question? Yes, sir. Doing some. Yes, sir. You can do this every, or do you want me to solve this? You can do, sir. Okay, मैं एक मैं solve कर देता हूँ उसके बाद आप कर लो. या आप करना चाहते हैं? देवुरा, you said you can do it or I can do it? We can do, sir. Okay, then try. No issues. वैसे ही मैं ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करता. No issue. You know how to solve, right? This a plus a transpose by 2, a minus a transpose by 2. Okay, you guys are solving this. Yes, sir. Okay.
2 minus 2 minus 4 minus 1 3 Sir, it's the same. Sorry, It's the same, sir. The answer. same. Same mean same. ठीक है, मैं कर लेता हूँ इसको एक कभी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपको पैटर्न समझ में लेना, हाउ टू राइट, देन यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। We'll say, suppose there is a let P equals to B plus B transpose of half. Okay, let's find B transpose, which is this value is 2 minus 2. So 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3. Okay. We are saying P equals to half of B plus B transpose. So half of B plus B transpose, if you do, this is 4 and minus 3 and minus 3. Minus 3. Minus 3, 6, 2. 6, 3, 2, minus 6. minus 3, 2, minus 6. Very good. Right. So I can see P equals to, let's multiply this half inside matrix. This is 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2. Minus 3 by 2, minus 3 by 2, 3, 1, minus 3 by 2, minus 3. 1 minus 3. Right. Okay. Now let's find P transpose. So do 2 minus 3 by 2 and minus 3 by 2 minus 3 by 2 3 1 minus 3 by 2 1, right? So we can see P equals to P transpose. Yes, sir. So P is a symmetric matrix. And remember, ये सब मैं आपको समझाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ. You have to write down all these steps. ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ. Alright, I'm just joking here. Alright, have to follow all these steps. You have to find P like this, then P transpose, then show that P is a symmetric matrix. Same way, you have to find Q. Let's take Q as half of B minus P transpose. Right? Then you have to find Q transpose and show that Q is a skew symmetric matrix. Okay? Then आपको क्या करना पड़ेगा? Find P plus. Okay? You will see that P plus Q is B. फिर आप लिख देंगे this is the answer. आया कुछ समझ में? That's what I said, sir. You said same, right? Same to what I did. I mean B. We got the same B question. Okay, okay. Yes, that's what you will get, right? We are actually, the question itself says express the matrix B, right? Okay. I mean, अब जैसे आप, जैसे आपका एग्जाम होता है, आपके आज करके नहीं आते हैं ना एग्जाम सपोज, तो टीचर क्या करता है, वो 0 लिख देता है कि एक्सप्रेस्ड दी, जो बोलते हैं ना आपका केयरलेसनेस टुवर्ड्स स्टडीज विद अ सिंबल but has equivalencies. Okay, got it. But please remember the steps. आपको ये सारे steps करने पड़ेंगे. आप सिंपल करके आ जाओ ना कि B equals to half of B plus B transpose plus half of B minus B transpose.
तो आपको 5 में से 3 नंबर मिलेंगे, सब कुछ सही होने के बाद भी। ओके, हैव टू डू व्हाट? P transpose show that this is symmetric. Q transpose show that that is Q symmetric. Then find P plus Q. Then show that B is equal to P plus Q. Okay? Got all the steps? Yes, sir. Okay. Both of you? Yes, sir. अलीजा, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है? Yes or no? No, sir. No. Okay, then very good. एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर सारे स्टेप्स के साथ लिखेंगे आप। Just let me write down the question. Just fine. Half of A plus A transpose and half of A minus A transpose when A equals to 0, A B minus A 0 C minus B minus C and 0. Okay?
Done, both of you? Aliza, Deborah? Doing, sir. Okay. Finished, sir. Any doubts in this? No, sir. But then it's fully zero, so it can be said as symmetric. Yes. Actually, I was going to ask you a question. Next question. My next question is, what matrix of dash matrix is a symmetric and skew symmetric matrix? And the answer is null matrix. Okay, null matrix both symmetric and skew symmetric matrix. All right. Okay, sir. Any doubts in this? No, sir. No, sir. So matrices is clear. Multiplication आ गया हमें, addition, subtraction, transpose, everything is clear. Yes, sir. Okay, Aliza, we'll give you backup classes, recordings also. Okay. Okay, sir. Then आपको भी कोई ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं. All right. And please do not miss the next class, which is tomorrow. कल बहुत जरूरी चीज करेंगे, which is question based on principle of mathematical induction. Okay, anyone knows what is mathematical induction? The principle and Principle of mathematical induction. okay, okay. Okay. In maths, what happens is, suppose मैं आया, okay, मैंने दुनिया को challenge कर दिया that if you find this,
then this will be true for any value of n. ठीक है, अब मैं तो ये बोल के चला गया, राइट, मैंने बोला फॉर एनी n, राइट, सपोज आई से फॉर एनी n नेचुरल नंबर, ठीक है, इजी कर लेते हैं। अब लीजा ये सोच रही है यार n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ऐसे इनफाइनाइट तक है, राइट लीजा? Yes, sir. So if I put n equals to 1, then I can see this is true, that yes, Yes, बिल्कुल sir. सही बात है। Now you are thinking कहाँ पे ट्रू होगा, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बट वी कैन नॉट पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक ही रख सकते, पूरी जिंदगी उसी में लग जाएगी, राइट? Yes, sir. So what they did is they tried to find a method, right? This is method of principle of mathematical induction. चलो, ये एक मेथड होता है which proves any statement is true or false, okay, in 3 steps. मतलब 3 स्टेप कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ऑलराइट, Yes, sir. व्हाट इज स्टेप 1? फाइंड ट्रूथ फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है? n की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो देख लो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेप 2, assume truth for n equals to k. स्टेप 2 में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि n की वैल्यू जब k है तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू, ओके? स्टेप 3, फाइंड ट्रूथ फॉर n equals to k plus 1. कि जब n की वैल्यू k plus 1 है, look if the statement is true or false. ऑलराइट, कुछ समझ में आया? सब ऊपर से चला गया? Yes, sir. ओके, प्लीज राइट डाउन ऑल द स्टेप्स, ओके? अगली क्लास में हम एक क्वेश्चन कर लेंगे इस पे, फिर सब क्लियर हो जाएगा। Okay, sir. प्लीज राइट डाउन ऑल द स्टेप्स। Done. Yes, sir. All right. So this is all for today's class. Do not leave. Okay. There will be an assessment, 10 minutes max. I won't be conducting that.
screen share हो जाएगा. You have to answer all the questions. Okay. Okay, sir. Just give me 1 second. We'll start the assessment soon. नलिसा, आपका एग्जाम कब है यार स्कूल में? सर स्कूल नहीं है मेरा, मतलब डमी स्कूल है मेरा. अच्छा, डमी स्कूल से. तो यू प्रिपेयरिंग फॉर जेई? What, sir? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर जेई? Yes, sir. ओके,